Dear students, as we are studying a goal with a basket, I am going to explain you some of the passages of the text. Let us start. I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. I had left न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज. मैं नई दिल्ली से हिमालय पर्वत के दर्शन के लिए निकला. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, देन बाई कार टू रानीखेत. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, देन बाई कार टू रानीखेत. अर्थात मैं बरेली तक तो ट्रेन से गया, किंतु उसके बाद रानीखेत तक की यात्रा मैंने कार से की. रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन. अब देखिए रानीखेत क्या है. रानीखेत अंग्रेजों के समय की एक पुरानी पर्वतीय सैन्य छावनी है. लोकेटेड ऑन अ 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. रानीखेत जो अंग्रेजों के समय की एक पुरानी पर्वतीय सैन्य छावनी है, वो 6,000 फुट ऊंची पर्वतीय श्रृंखलाओं पर स्थित है और इसके ठीक सामने लगभग 120 मील तक बर्फ से आच्छादित हिमालय पर्वत का विस्तार है. द ट्रेन वॉज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस. ट्रेन बहुत ही धीमी गति से चल रही थी और ये सभी स्टेशनों पे रुक करके चल रही थी. जब भी कोई स्टेशन आता था वो ट्रेन रुक जाती थी. एट एवरी स्टॉप आई swung ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट. और हर एक स्टॉप पे अर्थात जब भी ट्रेन रुकती थी मैं अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलता था और वॉक द प्लेटफॉर्म्स और प्लेटफॉर्म पे टहलने लगता था. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पैसेज इन इंग्लिश. In this passage, the author says that he left New Delhi to watch the beauty of Himalayas. He went to Bareilly by train and then after he took a car and went to Ranikhet. Ranikhet is an old British Army hill station which is situated above 6,000 foot on the ranges of Himalaya. In front of this hill station, there is the spread of snow-capped Himalayas near about 120 miles. The train was moving slow and it stopped at every station. Whenever the train stopped, the author alighted from his compartment and walked the platform. The platforms were packed with people: Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk world affairs and every major topic of the news of the day produced. In this way, I was trying to get a feel of the pulse of nation, checking opinion against official attitudes and reports. The platforms were packed with people. प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था. The platforms were packed with people: Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था जिसमें कुछ सिख, कुछ मुस्लिम, कुछ हिंदू, कुछ सैनिक, कुछ व्यापारी, कुछ कुली, कुछ भिखारी तथा कुछ फेरी वाले थे. ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट. और लगभग सभी लोग नंगे पांव थे. एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गॉर्मेंट्स. और सफेद रंग के ढीले कपड़े पहने हुए थे. आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people before I could find one who could speak
इंग्लिश। मुझे कम से कम 3 लोगों से बात करनी पड़ी, तब जाकर के मुझे एक अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति मिला। We would talk world affairs and every major topic of the news of the day produced. हम लोगों ने वैश्विक मामले पे चर्चा की, साथ ही साथ उस दिन के न्यूज़पेपर में छपे हुए मुख्य समाचारों पे भी चर्चा की। In this way, I was trying to get a feel of the pulse of nation. इस प्रकार मैं भारतीय लोगों की भावनाओं को जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और साथ ही साथ मैं ये चेक करना चाहता था कि सरकारी आंकड़ों और वास्तविक परिस्थितियों में कहीं कोई अंतर तो नहीं है। Dear students, I am going to explain this passage in English also. The platform was filled with people. Some of them were Sikhs, some of them were Muslims, some of them were Hindus, some of them were soldiers, some of them were merchants, some of them were potters, some of them were beggars, and some of them were hawkers. Almost all the people were barefooted and wore loose white garments. I had to talk to at least 3 people. Then I could find one who could speak. Then I could find one who could speak English. We discussed the world affairs and talked about the headlines of the newspaper. Thus, I was trying to know the feelings of Indian people, as well as I was trying to compare the situation of Indian people and official records. Thank you.